If you look forward to perform at your peak level, then conscious mind is not enough. You need your subconscious power to be at your best, performative at your best, and succeed in your life, work on the right things, and generate the right useful outputs. And we are going to learn something about this today through a story, a real story from the history. As I always say, one of my mentors said, Kushal, to create history, study history. And the lot of golden nuggets just in many books which has been written, which states history and which tells us which gives us the evidence that anything is possible. The same way, आज हम एक ऐसी ही स्टोरी को समझेंगे. Welcome to one more episode of Connecting the Dots with KK. As I mention always, I don't invest my episodes to editing and all, my time and energy. The reason being, I don't want to be dependent and give a lot of time and energy on editing. Due to my blindness, I just keep it raw, and I believe कि आपको अच्छे insights मिल रहे होंगे मेरे channel पर content के through, right? So, as we are talking today about conscious and subconscious mind, the peak performance level. We all know that conscious mind is awareness, right? Awareness जो भी आप देख रहे हैं, aware हैं, जो आप देख पा रहे हैं, जो आप सुन पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, वो conscious mind. But the way we behave happens through the subconscious process, subconscious mind. हमने जो भी देखा वो हमने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उस न्यूरॉन्स के पैटर्न्स बन गए. अब उस सबकॉन्शियस माइंड हमें कंट्रोल करता रहता है. आपने देखा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप बैठे तो हैं लेकिन आप कहीं और ही खोए हुए हैं, और उसमें से कुछ एक आपके एन नंबर ऑफ थॉट्स में एक थॉट कुछ ऐसा है जिसको आपके माइंड ने पकड़ लिया. अब उसको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी थॉट्स आ रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी जो सिचुएशन नहीं होती उसमें भी डीपली जाके वैसे ही इफेक्ट्स हमारी बॉडी में क्रिएट कर देता है. व्हाई? बिकॉज द माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड व्हाट यू आर थिंकिंग. it feels as if it is happening, right? जितना आप डीपली पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही वो न्यूरॉन्स हिट करेंगे, जितना आप नेगेटिवली सोचेंगे अकॉर्डिंग विल बी द रिजल्ट, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस रियल सिनेरियो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, subconscious behavior from a sportsman from 1954, right? Mr. Bannister, right? I just forgot his initial name, so sorry for that. So this person, Mr. Bannister, I think Robert Bannister, right? So ये एक 4 minute mile ये रनर थे. And what happened was, everyone during those time in 1954, everyone believed that it's impossible to run a race under 4 minutes. Doctors, all the runners used to say, no, it's not possible, it's not possible. Doctor used to say ki they used to give the reasons ki our lungs are not enough. If anyone tries to run a race within 4 minutes, he or she might get the heart attack, right? These were all the reasons, and the same pattern continued for all the runners. सब लोग कहते थे कि I cannot do this, I cannot do this, I cannot do this, until this sportsman, Mr. Robert Bannister, stated that he changed the definition. He said, I can do that. And everyone were like, सब लोग उसको उन्हें कहते थे कि how will you do that? It's not possible at all. You run a mile in 4 minutes 11 seconds. You cannot do that. But still, he used to say, I can do that, I can do that. He used to, the self-talk was so powerful and so positive. He always used to say, I can do that, I can do it, I can do it, I can do it. Until one day he crashed the race by completing it in 3 minutes 59.4 seconds. And that was possible because of self-talk. And that became a breakthrough moment, not only for Mr. Bannister, but also for other sportsmen as well, other runners as well. Now, the same year, 27 more runners completed the race within under 4 minutes.
right? Can you just imagine what happened with just a self talk by creating it? It was said, like, I read it long back, I think around a decade back. I read a statement. I think I heard it from Arnold Schwarzenegger. He said, everything seems to be impossible unless and until someone does it, right? So this moment, Mr. Bannister created that. He ran a race under 4 minutes with a time frame of 3 minutes 59.4 seconds. And the same year, 27 more runners completed it under 4 minutes. And the next year, the count was 200 plus runners did it under 4 minutes. Now, what changed? The only change was the self-talk, the positive self-talks. Earlier, people used to say, I cannot do it, I cannot do it, this cannot be done, I cannot do it, it's impossible, it's impossible. But once it was done, now people started saying, I can do it. It can be done. It can be done. I can do it. I can do it. This positive self-talk changes everything, right? Everything. Now, just in my case, if I tell you, even I thought, यार कैसे होगा मतलब blindness and everything. I'll tell you about myself. Long back when I used to upload, when I used to try uploading videos on YouTube, I was like, this is hell crazy. I cannot do this. I cannot do this. But sometimes, like, I was like, I used to upload it. I used to upload it, but I didn't know how to select the public or how to make it unlisted or something. What I used to do is I used to just save and close it. It used to get in drafts. And then I used to call my friend. I had given my credentials to my friend. And I used to tell her, please, can you make it unlisted or public accordingly? Every time I was dependent on something. And one day I thought, like, how long should I be dependent for this? मैं कितना dependent रहूंगा इस चीज के लिए कि ठीक है मेरी आंखें नहीं है let's focus on what I can do. And one day I sat, I believe me, I spent almost half a day to figure it out to work with voiceover, how to make a video unlisted or public. And finally I did it, believe me. मैं बैठता था घंटा 2 घंटा कंटिन्यू बैठा है मैंने और मैं देखता था कि अनलिस्टेड होता क्या. देयर वाज ओनली वन स्टेप व्हिच आई वाज मिसिंग. बोर होता था, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता था. आई यूज्ड टू गेट अप फ्रॉम माय स्पेस, टेक अ वॉक on my terrace and hydrate myself. And I was like, I'll find it out. I'll find it out. I can do it. I can do it. I can do it. And believe me, the same day when I decided that I'll find it out, I found it how to do it. I started uploading my own videos. और जो भी आप ये वीडियोस मेरे यूट्यूब पर, मेरे पॉडकास्ट पर देखते हैं, आई अपलोड इट ऑन माई ओन. दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. वंस आई डिड इट, लाइक आई एम ओके. इट्स नॉट लाइक मैं पहला अंधा इंसान हूँ दुनिया का, नहीं. But it's all about self talk. I try to be at my best to give positive self talks. ऊपर नीचे होता है, that's okay. But again, replacing your thoughts is very important from negative to positive, right? ये स्पोर्ट्समैनशिप में बहुत होता है. एथलीट्स में आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर को आपने देखा होगा पहले कि हाँ वो फील्ड पर खुद से ही बात कर रहा है. व्हाट डू दे डू? It's very easy for our mind to pick up the negative thought. I cannot do this. This situation is very dangerous. This situation is out of control. Everything, and then subconscious mind takes over. Yes, yes, the situation is dangerous. Let me take a break. Let me step back, and everything. All this stuff happens. But what do sportsmen do? They replace their thoughts immediately by self-talking. You must have seen on cameras and all. They used to self-talk. नहीं नहीं ये हो जाएगा. मैं करेगा, all those talks, the Sachin Tendulkar stuff. आई बिलीव कि बहुत पहले मैंने एक कहानी सुनी थी सचिन तेंदुलकर के बारे में. आई थिंक पाकिस्तान का, मैं उनका नाम भूल, यूनिस वकर शायद, वकार यूनिस, सॉरी, वकार यूनिस. बाउंसर के कारण सचिन तेंदुलकर के नाक पे बॉल लग गया था. एंड ही वाज ब्लीडिंग हेवीली ऑन पिच, ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ. एंड ही वाज आस्क्ड, लाइक, वुड यू लाइक टू टेक अ ब्रेक, लाइक आप वापस जाना चाहोगे पवेलियन में? ही वाज लाइक, नहीं, मैं खेलेगा. आई मीन दैट वाज सो बूस्टिंग. मुझे वो, मतलब, आई थिंक नवजोत सिंह सिद्धू का एक यूट्यूब पर वीडियो भी है. इफ यू जस्ट गो एंड वॉच इट, इट वाज सो बूस्टिंग. मुझे गूजबम्स आ गए थे मैंने जब पहली बार सुना. लाइक, leather ball has hit his nose and he's like, I will play. That's the spirit, that's the self talk, positive self talk we need to do with ourselves as well. ठीक है भाई, स्पोर्ट्समैनशिप में बहुत होता है ना. ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया. अब हम हमारे साथ क्या करें? 10 सेकेंड्स रूल. ये बहुत पावरफुल है. जब भी आपको नेगेटिव थॉट हिट करे, नेगेटिविटी कुछ आई आपके पास, जस्ट
से कैंसिल 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 कैंसिल, भाई रुक जा, ठीक है, तू जहाँ है वहीं रुक जा ना, इमीडिएट रिप्लेस नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दिस। आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आई विल डू एट माई बेस्ट, आई विल बी एट माई पोटेंशियल। मैं वो हर चीज करूंगा जो ग्रोथ में मुझे कंट्रीब्यूट करेगा, आई वर्क ऑन एवरीथिंग दैट विल कंट्रीब्यूट फॉर माई ग्रोथ, आई एम हैप्पी। आप एंकरिंग कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया बताया था कि आप हार्ट पेट के जैसे जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान करता था, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, वो एंकरिंग थी, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। एक स्टेटमेंट था, सेल्फ पॉजिटिव टॉक, एंड एक एंकरिंग थी, जब भी वो अपने दिल पे हाथ लगा ऐसे टैप करता था, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, एंड हिज माइंड इज टू लाइक काम डाउन, ओके ओके। उसकी बैकग्राउंड की स्टोरी भी आप लोगों को पता है, आपने मूवी देखी है, राइट? सो दैट्स हाउ you always have to talk with yourself. I'm happy, I'm calm, I'm patient, I mean, I'll just do it. I can do it. I'm the best. ये सारे सेल्फ टॉक कीजिए एंड सी द मैजिक। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन वापस नर्वस हो गए तो अरे कुशल का वीडियो देखा था, कुशल का एपिसोड में वो उसने बताया था, नॉट लाइक दैट। यू हैव टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है? नाउ दैट्स द 10 seconds रूल आई शेयर्ड। जब भी नेगेटिविटी लगे, आप लो फील करो, इमीडिएटली रिप्लेस योर नेगेटिव स्टेटमेंट्स, नेगेटिव सेल्फ टॉक्स विद अ पॉजिटिव वन। आई जस्ट गिव यू सम एग्जांपल, that's how it has to be done. Now you just have to implement, guys, you just have to implement, because मैं हमेशा कहता हूँ, अगर एक बंदा जिसने अपनी आंखें खो दी in the mid of his journey, if I'm able to do it, I don't think you should have any reasons to quit working on your goals. Please don't quit. Don't stop the game that you have already started playing. Please keep playing. Please keep doing your best. एक पर्पस के साथ चलिए लाइफ में, रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, बिलीव इन द प्रोसेस। प्रोसेस बहुत पावरफुल होता है। मैं एक बड़े शानदार मोटिवेशनल स्पीकर ने बहुत पहले कहा है कि यू जस्ट नीड टू थिंग्स टू सक्सीड, अ पर्पस एंड फेथ। यू नीड अ पर्पस इन योर लाइफ कि क्या करने वाले हो आप जिंदगी में, और दूसरी बात है आप फेथ चाहिए। होप एक अलग चीज है, like once Jim Carrey said, hope is a beggar, right? Have faith in the process. The point number two, right? Purposeful चलिए लाइफ में, माइंडफुल रहिए, और बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। इफ यू चूज टू मेक इट, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट? सो आज के लिए इतना ही काफी। 10 seconds रूल के साथ अपने नेगेटिव थॉट्स को इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस कीजिए एंड सी द मैजिक दैट अनफोल्ड्स फॉर यू, बट इट नीड्स अ कंसिस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस। पीक परफॉर्मेंस पे खेलना है तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है बॉस, राइट? आई बिलीव कि आपको अच्छे इंसाइट्स मिल रहे हैं मेरे चैनल पर, और मिल रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप के साथ एक गोल लिया है कि जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 रीच होंगे, आई विल रीच आउट टू वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया एंड आई एम गोइंग टू इंटरव्यू दैट पर्सन, राइट? मैं उनका नाम अभी रिवील नहीं करूंगा। I'm just waiting for things to align and I'm going to interview that person. So yeah, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि कैसा लग रहा है। अगर आपको कुछ टॉपिक पे सीखना है या समझना है, प्लीज शेयर दैट एज वेल। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू इंसाइटफुल वैल्यूज ऑन। सो आज के लिए इतना काफी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर। दिस इज कुशल कुलकर्णी। लव यू, स्टे ब्लेस्ड, you're getting things done, coach. Yes, that's what I want to say about myself, right? So yeah, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।